Konnichiwa minasan and welcome back to Anita OS। फोरशैडोइंग तो उनके लिए जो अपनी इंग्लिश क्लास सो के बिता देते हैं। फोरशैडोइंग का मतलब है एक इवेंट घटने से पहले कोई साइन या कुछ हिंट्स दिखाना। द फोरशैडोइंग इन अटैक ऑन टाइटन इज जस्ट लाइक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इस पूरे ओशन में से हमने कुछ पॉइंट्स उठा के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with the biggest plot twist of Attack on Titan, जो कि है about धोखेबाज trio. The धोखेबाज number 1 was revealed in season 1 episode 25 and धोखेबाज number 2 and 3 were revealed in season 2 episode number 6. लेकिन ये तीनों warrior है और to be exact Titan है। इसको लेके पहले से ही बहुत सारे hints दिए गए थे। Yes, I'm not even joking. ऐसे बहुत सारे hints दिए गए थे about Laina, Bertholdo and Annie being the धोखेबाज trio. Among all those hints, some of them are As we already know, after the fall of Shiganshina district, Eren and the people who survived were brought to Trost district in Wall Rose. So in this scene, as you can clearly see, Laina and Bertholdo. By this scene, you can clearly understand that they both come from Shiganshina district, and as we already know, the Titans attacked from the Shiganshina district after the Anisim broke the wall. In this scene, as you can clearly see, Annie asks to Reiner, "What now?" आप लोग सोच रहे होंगे कि what connection does it make to the धोखेबाज trio? Well, in this scene, cross district walls were already broken, and this was all according to the plan for luring out the founder Titan. This thing was revealed in episode number 62, जहाँ की Reiner's plan was explained. In this scene, Annie said sorry to her stepbrother Sasuke. I said you a million times, stop sleeping while making the script. Okay, getting back to the point. Why did she say sorry? The answer is वो sorry कहते हैं क्योंकि वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है for the death of her comrades. This scene also proves that Annie was actually way more attached to the 104th Cadet Corps. 104th Cadet Corps. No, Tommy. 今喋った。巨人が喋った。ありえない。ヤミル様。よくぞ。Going on to the next major foreshadowing in Attack on Titan was about कैसे Titan's ability also depends upon their blood DNA. In the OVA, Ilse's notebook एक Titan था जो बात करता था, and he called Ilse Ymir Sama जो actually में Ymir का follower जैसे दिखता था from back then. It also hints a lot about the Titan's true nature. तो नेक्स्ट फोरशैडोइंग है अबाउट एन ओपनिंग विच इज मोर फॉरगॉटन देन पेट्रा। इस ओपनिंग में वी कैन क्लियरली सी द न्यू एनिसिम कवर्ड इन ब्लड, और सिंस टाइटन ब्लड इवेपोरेट्स इट माइट बी अ फोरशैडोइंग ऑफ द ब्लड ऑफ हिज फ्रेंड्स दैट वर किल्ड एंड दोज ही विल किल इन द फ्यूचर। द लिरिक्स इवन इफ आई एम द लास्ट वन स्टैंडिंग प्रूव्स इट। In ending 2, we can see Annie, Laina, Anisim. Stop calling him Anisim, जाकि तू खुद Anisim है।
Ymir and Eren's wife on the other side of the wall, opposite to the others. ये foreshadowing दिखाता है कि members of the 104th Cadet Corps have something to hide and aren't actually living the truth. And this again adds up to the Dhokebaz trio theory. 戦え The next foreshadowing is about our Chad boy Eren. Gonna dance again the way I dance with you. During his days in 104 Cadet Corps, Eren अपना vertical maneuvering gear properly इस्तेमाल नहीं कर पाता था, तो उसके पहले ट्रेनिंग के दिन में he falls down and injures his head. यहाँ आप clearly देख सकते हैं कि steam can be spotted rising above him shortly after. This is a foreshadowing about Eren being a Titan. The next foreshadowing is about the existence of people outside the wall. The existence of people outside the wall हमको episode number 56 में पता चला था. It was also revealed कि humanity outside the wall were not actually finished. They were much more advanced in technologies. But what happens अगर मैं आपसे कहूँ कि existence of humanity outside the walls were revealed much earlier? क्या हो गए ना हैरान? To prove this there are literally many several points and मैं उन्हीं में से आपको कुछ बताने वाला हूँ. おい見ろよ、こんなもんまであったぞ。ゲルガそれは酒かい？なんて書いてんだ。まさか今飲むつもり？バカ。 जब वालरोस के अंदर कुछ टाइटन आ गए थे, कुछ स्काउट्स मेंबर्स मिलकर एक कैसल में रहे थे. दिस वाज इन एपिसोड नंबर 29. तो इस एपिसोड में स्काउट्स को कुछ चीजें मिली थी जो कि दूसरी लैंग्वेज में लिखी थी. एंड एज वी ऑलरेडी नो, पीपल लिविंग इनसाइड द वॉल नो ओनली वन लैंग्वेज.その割にはあの時のお前ら二人してガキみてえに目を輝かせて見てたよな、あの猿を。なんだ、猿って。まあ聞け、その猿って獣の巨人が。इन एपिसोड नंबर 34 जब यमिर ने मंकी कहा था, एरन ने पूछा था कि व्हाट्स दैट मंकी. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एरन डिड नॉट एक्चुअली न्यू द वर्ड मंकी, जहाँ की राइनर बेल्थोल and Ymir were very casual with that word. This proves that the word monkey was not actually used inside the walls. So these were some of the foreshadowing we could figure out. If you have any other points, feel free to comment down below. Also an important announcement that please join Anime India server where you can meet some toxic, wholesome people, and also we conduct some events, so make sure you join the Anime India server. Also comment down ideas for our future videos. So that's it. I'll be seeing you in the next video. Sayonara.